Hello everyone, welcome to BISWA'S Chemistry. Myself Kausik Biswal and welcome to Mahabharat series. In this lecture, I am going to discuss about the most expected 2 marks, 3 marks questions of the chapter solution. हम 2026 काउंसिल एग्जाम को टार्गेट करिबा और माने समस्त सक्सेसफुल होबा ओके आ जत मन वीडियो टी भल बुझी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कौशिक बिस्वाल ऊपर विश्वास रखो काहे ना तमानकर विश्वास भरोसा ही मो पय सब किछि ओके। चलो लेट न करी देखिबा आज हमर फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि। फर्स्ट क्वेश्चन अछि गोटे 3 मार्क्स एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन अछि व्हाट डू यू मीन बाय एजियोट्रोप। माने एजियोट्रोप कहले आ माने कोन बुझिबा ओके। तला एजियोट्रोप कहले आ माने बुझिबा ई होज पिला माने दीटा लिक्विड रो मिक्सचर जहार कंपोजिशन हमर फिक्स थाए आउ सेमानकर बॉइलिंग पॉइंट सेम थाए आउ सेमान फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करी हुए नै आउ ता सहित सेमानकर कंपोजिशन भी कोन थाए फिक्स थाए आउ ता सहित लिक्विड फेज रे सेमानकर मोल फ्रैक्शन जहा वेपर फेज रे भी सेमानकर मोल फ्रैक्शन सेया तले तियो कंडीशन को सैटिस्फाई करिवो से मिक्सचर को हमने कोन कहबा एजियोट्रोपिक मिक्सचर। चलो मु तार कंडीशन लिखिबी, कंडीशन लिखि तार डेफिनेशन को लिखिबी ओके आउ ता परे मु तार क्लासिफिकेशन करिवि ओके। तला एजियोट्रोप पई प्रथम मु तार कंडीशन लिखियो बुझेबी। एजियोट्रोप रो प्रथम लिखिबी तार कोन कंडीशन। एजियोट्रोप रो फर्स्ट लिखिबी कंडीशन। प्रथम हला ये गोटे लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन हला ये गोटे कोन हेतु दरकार लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन। माने करो गोटे सॉल्यूशन बनेबी, माने करो बनेबी 95% aqueous solution of ethyl alcohol बुझो ना बुझोनी ता माने देखिलो ये जो सॉल्यूशन बनेबी आ भितरे वाटर अछि आउ ता भितरे की अछि इथाइल अल्कोहल अछि। इथाइल अल्कोहल तमर अछि 95%, वाटर अछि तमर केते परसेंट 5%। क्लियर ना क्लियर नो ताले वर्तमान देखिलो ये भी वाटर भी लिक्विड इथाइल अल्कोहल भी लिक्विड ना ता माने दीटा कंपोनेंट जेतु अछि तेनु करे हम को सॉल्यूशन कहबा बाइनरी सॉल्यूशन आ दीटा जेतु लिक्विड फेज रे अछंती तेनु करे ए सॉल्यूशन ना कोन हेगला लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन। त माने जे एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनेबो छोटे लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन हेतु दरकार फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन हला सेमानकर कंपोजिशन फिक्स्ड होबा दरकार। फिक्स्ड कंपोजिशन सेमानकर कंपोजिशन कोन होबा दरकार फिक्स्ड। देखो एमानकर कंपोजिशन को मु फिक्स्ड कर देछि काहे कि ना इथाइल अल्कोहल अछि 95%, वाटर अछि 5%। त माने एमानकर कंपोजिशन को मु कोन कर देछि छुआ फिक्स्ड कर देछि। क्लियर ना क्लियर नो गला। वर्तमान पॉइंट नंबर सी रे लिखिबी। सी रे हला पिला माने boils at a constant boiling point। boils at a कोन तमरो constant boiling point। एमानकर boiling point तमर कोन हे जिवो constant हे जिवो मींस तमन जानि जो इथाइल अल्कोहल boiling point हला 353 केल्विन, वाटर जानि जो 373 केल्विन। जेतबेले दीटा को मु मिसै देबी सेमानकर boiling point पिला माने गुटे हे जिवो। माने कर प्रैक्टिकल देखाइ छि एमानकर boiling point केते जिवो 350 केल्विन। देखिलो सेही टाइम रे वाटर कहबनी मु 373 केल्विन ने बॉयल हेबी कि इथाइल अल्कोहल कहबनी मु 353 केल्विन ने बॉयल हेबी हला। सेमानकर बॉइलिंग पॉइंट पिला माने गुटे हे गला जो माने कि तांकर बॉइलिंग पॉइंट कोन हे गला कांस्टेंट हे गला। क्लियर ना क्लियर नो डी पॉइंट यदि बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हे गला तमन जब चाहिबो दीटा को लिक्विड को अलगा करिया पे अलगा करि परिबो कि करि परिबो नाही सेटो का माने कहबा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हला। ता माने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हे परिबो नाही काना दीटा को लिक्विड रो बॉइलिंग पॉइंट सेम हे जाई। जेतोले टेंपरेचर अछि 350 रे पहुंच जिवो दीटा को लिक्विड वेपर हे कि आ गोटे कंटेनर को उडी की पळेबे जोति पय कि सेमान को त माने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा अलगा करि परिबो नाही। त पॉइंट नंबर डी हला फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन is not possible। fractional distillation is कोन तमरो not possible। आ गोटे पॉइंट हला वाटर रो लिक्विड फेज रे मोल फ्रैक्शन जति थिबो त हीट कोला पर जो वेपर ऊपर लागिवो तार मोल फ्रैक्शन भी सेति रहइबो। क्लियर ना क्लियर नो इथाइल अल्कोहल मोल फ्रैक्शन जहा थिबो त हीट कोला पर तार वेपर फेज रे भी तार मोल फ्रैक्शन सेया रहइबो। क्लियर ना क्लियर नो त लिख दे परिबा मोल फ्रैक्शन of the vapor phase must be equal to the mole fraction of the co-phase liquid phase। एटा vp माने वेपर फेज हला हला एटा co-phase वेपर फेज। क्लियर ना क्लियर नो बर्तमान चलो एतिको पॉइंट को मिसै की आ माने कोन लिखबा तार डेफिनेशन हला। ताले it is a mixture of two liquids। it is a mixture of
two liquids whose proportion cannot be changed, whose proportion cannot be changed or altered by simple distillation, by simple distillation. Okay, it is a mixture of two liquids whose proportion cannot be changed or altered by simple distillation. This happens because when an azeotrope is heated, because when an azeotrope is heated, the vapor has the same composition as compared to the liquid phase. As compared to the liquid phase, लिख दे परिबो unboiled mixture भी लिख दे परिबो as compared to the unboiled mixture. Hala, it is a mixture of two liquids whose proportion cannot be changed or altered by simple distillation. This happens because when an azeotrope is heated, the vapor has the same composition as the unboiled mixture. Okay, as compared to the unboiled mixture. Okay, तो लिहेला तमर ई कंडीशन रो डेफिनेशन. ओके, वर्तमान देखाउ तो समस्त को क्लियर तो. ओके, वर्तमान आमे से azeotrope को डिवाइड करिबा हला. तमर से azeotrope वर्तमान केते प्रकार रो? दी प्रकार. ओके, चलो टेक ए स्क्रीनशॉट. ए azeotrope केते प्रकार तमरो? दी प्रकार. गोडला तमरो मिनिमम boiling point azeotrope आवडला maximum boiling point azeotrope हला. minimum boiling point azeotrope आवडला कोन तमरो maximum boiling point azeotrope. very interesting जिंस देखलो एटी तुम लिखा जी boiling point टा maximum ना minimum जदि boiling point तमर minimum ताले vapor pressure तार कोन हबो maximum. आ तमन जन vapor pressure maximum को केस रे हुए ना non ideal solution with good deviation positive deviation हला. non ideal solution with positive deviation रे तमन जानि छ तमर vapor pressure कोन हुए maximum आ boiling point कोन हुए minimum. तमन जी तमरो minimum boiling point azeotrope सी तमर हेतिबो non ideal solution with good deviation positive deviation जोथि पई की तार vapor pressure कोन हेतिबो maximum. आ तार एग्जांपल लिखि दबो एना कराई दिला 95% aqueous solution of ethyl alcohol. बुझियो जना बुझवानी क्लियर ना एटा बटे लैंग्वेज देख लिखिबार अछि. ओके एना नै तापडा सेमती maximum boiling point azeotrope ताल देखले एमानकर boiling point कोन अछि maximum ना. जदि एमानकर boiling point तमर maximum ताले एमानकर vapor pressure तमर कोन हबो minimum. vapor pressure हबो कोन छुआ minimum. आ तमन जन vapor pressure को केस रे तमर minimum हुए non ideal solution with co deviation negative deviation. non ideal solution with co deviation negative deviation हुए non ideal solution co deviation negative deviation. आ तार एग्जांपल में लिख दे परिबे एठी एग्जांपल लिख दे परिबे 68% aqueous solution of nitric acid हवन ये तमर एग्जांपल ला कहरो तमर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट azeotrope. तले मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट azeotrope तमर से देखेबो जे तमर नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ को डेविएशन देखो दुआ नेगेटिव डेविएशन जोथ पई कि तार वेपर प्रेशर कोन मिनिमम
अदर बेस्ट एग्जांपल है 68% aqueous solution of nitric acid. Are you getting my point? So guys, please take a screenshot. चलो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हाट इज वेंटो फैक्टर, राइट इट्स डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन केसेस. हला वेंटो फैक्टर कहले माने कोन बुझिबा आ तार डिसोसिएशन केसेस आ तार एसोसिएशन केसेस ए दी टाइम का माने कोन करिबा लिखिबा. क्लियर ना क्लियर नो. तो माने जानता वेंटो फैक्टर होची इट इज द रेशियो ऑफ द ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू इट्स थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड वेंटो फैक्टर. ता माने गोटे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तुम जोटा ऑब्जर्व करिथिबो ता देरे आ जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तुम माने थियोरेटिकली डिवाइड बाहर कर दिबो से दी टाइम जदि हम डिवाइड कर दबा बा से मान को रेशियो को आ माने कोन कहबा छुआ ना वेंटो फैक्टर. क्लियर ना क्लियर नो. आरो देखो वीडियो जाई देखो जानि परिबो. ओके ता लिख दबा इट इज द रेशियो of the observed colligative property. It is the ratio of the observed colligative property. It is the ratio of the observed colligative property to its theoretical colligative property. Is called वेंटो फैक्टर. हला तो सिंबॉलिकली डिनोटेड करा जाए बाद सिंबल ला कोन तमरा आई. चलो हम तार फार्मूला लिखिबी. I is equal to observed colligative property. Okay, observed colligative GATI V, observed colligative property by theoretical colligative property हला theoretical colligative property हला observed colligative property by कोन हैला तमरो theoretical colligative property. क्लियर ना क्लियर नो. तले वेंटो फैक्टर I is equal to observed colligative property divided by theoretical colligative property. क्लियर ना क्लियर नो. तले वर्तमान वेंटो फैक्टर I is equal to तार अछि दीटा केस गोडला डिसोसिएशन केस. को केस तमरो डिसोसिएशन केस मन के थिबो सिंपल लिखिबार अछि. डिसोसिएशन केस रे वेंटो फैक्टर I टा सबले ग्रेटर देन हो कोन तमरो 1. आउ जो तमरो पचारला एसोसिएशन केस ओके माने जोडी हो जेते बेले सेते तमरा I रो वैल्यूटा सबले कोन हबो लेस देन 1. एडा मन रखिबो. डिसोसिएशन केस रे वेंटो फैक्टर I रो वैल्यूटा ग्रेटर देन 1 हबो आ तमरा एसोसिएशन केस रे वेंटो फैक्टर वैल्यूटा I टा सबले लेस देन केते हिजबो तमरो 1 हिजबो. ओके तला जेती क्वेश्चन डिस्कशन करेली आरो क्लास रे मारो न्यूमेरिकल्स नै केस्तिबी तापर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करिबी. ओके तो जो मन वीडियो भल लगुची वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. कौशिक बिस्वाल पर विश्वास रखो. तो मन विश्वास भरोसा मो सब किछि. थैंक्स ए लॉट. जय जगन्नाथ.